हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ASA एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 68 रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर बुक से। और आज का जो टॉपिक है रिलेशंस एक्सप्रेस बाय प्रपोजिशन। रिलेशंस यानी कि कौन सा टाइम, प्लेस, मैनर, वैल्यू, कंट्रास्ट, जो भी आपके रिलेशंस इसके एक्सप्रेस होते हैं उनके बारे में बताएंगे। पहला दिया हुआ है एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ द प्रपोजिशन इन। आई विल डू इट फॉर ऑल यू मे से। फॉर ये यूज हो रहा है कंसेशन के लिए। This work is beyond his capacity, beyond excess को शो कर रहा है। I would do anything before that, before time को। After this, I wash my hands off you। Off भी जो है preposition को दर्शा रहा है। पहले after जो है वो बता रहा है time का, और off separation का। It is cool for me। For यहाँ पर contrast बता रहा है। She made grand preparations against his coming, against anticipation. It was all through you that we failed, through cause. He was left for dead on the field. Supposition. That they did was pity to this. To reference. The lifeboat made straight for the sinking ship. For direction. I shall do my duty by him. By direction. He married for money, for purpose. A man is a man for all that. For contrast. Nothing will come of nothing. Origin. With all his faults, I still like him. With concession. तो इस एक्सरसाइज में आपको फोर्स बताना है कि किस तरीके से प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। आपको एक्सरसाइज समझ में आई? सब्सक्राइब करिए ASA एजुकेशन। हैं अगली एक्सरसाइज।